Hello, dear students, and welcome to yet another chapter of history. And this time, the chapter is Towns of the Medieval India, which is chapter 7 of your book. So, let's begin with the towns of the medieval India. Now, you will find that there are lots of names in this, lots of types of towns. So, you kind of question yourself, okay, what is this chapter all about? देखो टाउन्स जो है बच्चे मडीवियल इंडिया का बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर थे और टाउन्स बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते थे सो ऑन द बेसिस ऑफ द रोल दैट दे प्लेड they have been divided into four major categories. So let's start talking about the towns of the medieval India. So what were these four towns? Four type of towns. One, towns as the administrative centers, towns as the center of pilgrimage, towns as commercial towns which serve the purpose of trade and commerce, and towns which serve the purpose as port, and then they later emerged as the port towns. So first of all, we'll study about the towns which emerged as the administrative centers. ना इस पहली जो अब हमने डिमार्केशन की है उसमें हम बात करेंगे थिंजौवर की, दिल्ली और आगरा की. Right, so सबसे पहले बच्चे we'll be talking about Thanjavur. Now this was the capital of Cholas and ये आपकी पहली example है of the administrative centers. So यहाँ पर मंडप थे. So time and again मंडपास give you an impression के पता नहीं क्या चीज़ है. So मंडप, आप किसी हिंदू wedding में जाओगे, so you have this मंडप. So basically in the palace there were a lot of मंडप जहाँ पर king used to hold courts, give orders, make it political, and thus it was made a political and an administrative capital. Army was stationed here, trade and commerce developed here. There were also the sculptors here. So this is the Thanjavur I'm talking about and the capital of the Cholas, and these were the kind of mandapas or the mandaps which I'm talking about. Now town as an administrative center में आपको दो और towns आते हैं, Delhi और Agra. So if you can just see here, now Delhi and Agra, they were well protected by the forts. These towns had their mosque, bazaars, sarais. Sarais are something you can say as inns or modern day small hotels. So nobles, officials, scholars, soldiers, physicians or the doctors, artists, they all settled in Delhi and Agra, and the karkhanas were also set up here. So very quickly we have done first type of towns, that is the towns as the administrative centers. We have done as the first Thanjavur, the capital of Cholas. We've also done about Delhi and Agra. All right, now towns as the center of pilgrimage, right? So ये कौन से towns थे आपके? So let me have my pointer with me, and that will be helpful. Now one is Vrindavan in Uttar Pradesh, Somnath in Gujarat, Kanchipuram and Madurai in Tamil Nadu, Tirupati in Andhra Pradesh, and Ajmer in Rajasthan. So ये जो towns हैं, they were the centers of the pilgrimage. Now अगर हम ये सोचें कि ये जो सेंटर्स हैं, स्पेशली आपके जो पिलग्रिमेज जहाँ पर थे या जहाँ पर आपके लोग जो है प्रे करने जाते थे, ये कैसे जो है आपके टाउन्स बन गए. सो पहला स्टेप क्या था बच्चे कि रूलर्स दे बिल्ट टेम्पल्स, एंड टेम्पल्स के लिए दे यूज टू गिव ग्रांट्स. नाउ ग्रांट्स देने का मतलब था दैट दे वांटेड टू शो देयर रिलीजियस डिवोशन. So all the pilgrims, they also started visiting these places, and they started making donations, and this is how the temples developed into major center for social, economic and religious activities. And after this, even people began to settle here. People also began to settle here. Now, when we talk about Ajmer in Rajasthan, it was a very unique pilgrimage place, because here we find the dargah of Khwaja Muinuddin Chishti, right? And thousands of pilgrims they visited, and we also have a Hindu, important lake called as the Pushkar Lake near Ajmer. Right, now the third thing we will be talking about the commercial towns. So we've talked about towns as the administrative centers, we've talked about the towns which served as your religious purposes. Now we have towns which were also known as the commercial towns.
अब कमर्शियल का मतलब होता है ट्रेड एंड कॉमर्स. सो ये जो टाउन्स है बच्चे, ये कहाँ होंगे? दे विल डेवलप अलोंग दी ट्रेड रूट्स. नाउ व्हाट आर ट्रेड रूट्स? जिस रास्तों के थ्रू जो है ट्रेड जो है जाती है, सो दैट इवेंचुअली केम टू बी नोन एज द ट्रेड रूट्स. अब ये जो टाउन्स है, दे ऑल्सो वर लिंक्ड विद द रोड्स. एंड इसमें दो लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे. पहले मैं बात करूंगी शेर शाह सूरी का, और दूसरा मैं बात करूंगी आपके मुगल्स का. देखो, शेर शाह सूरी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था. उन्होंने एक इंपीरियल रोड थी सुनारगांव, आप यहाँ से देख भी सकते हो, राइट, एंड नियर ढाका, राइट, से लेकर जो है पेशावर नियर द नॉर्थ, दैट दिस इज द रोड दैट ही repaired, and this connected many trading areas in the north. So इसके साथ जो है he also built these sarais. So this is one way that the towns which were on this imperial road also emerged as the commercial towns. इसमें मुगल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज मुगल्स अलाउड द यूरोपियन ट्रेडर्स टू एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेटलमेंट्स एट वेरियस प्लेसेस. सो यहाँ कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट हैं? सूरत, मुंबई, Pondicherry, Madras, and Calcutta. Now, these places, they gradually developed into commercial towns. So, let me talk about them. See, they were also called as the port towns. Of course, they were called as the port towns also. और यहाँ पर ये commercial towns भी है, क्योंकि यहाँ पर trade and commerce होती थी. So, you have Surat, if I have a pointer. Just hold on. Okay, so you have Surat, Mumbai, Chennai, Pondicherry, Kolkata. So these were the areas बचे जहाँ पर पहली बार जो है यूरोपियंस आए, उन्होंने अपने जो है ट्रेडिंग सेंटर्स यहाँ पर खोले, और यहीं से जो है ये एरियाज कमर्शियल टाउन्स के तौर से बन गए. Now we also have the port towns. Now before I talk about the port towns, now basically बच्चे port towns क्यों important थे? Because India developed overseas contact with Southeast Asia, with West Asia, China and Europe. That means India जो है, it had trade relations with the Europe, it had trade relations with the Central Asia, it had trade relations with the China and the Southeast Asia. So you can imagine बच्चे कितनी दूर दूर से जो है इनके ये सारे ट्रेड रिलेशंस थे. So that is how जितने भी आपके एरियाज जो हैं आप देख सक रहे हो, पोर्ट में जो है पोर्ट की तरीके से यूज़ करे जा सकते हैं. So they became the important port towns. Right, so let's just kind of say about them. Now, one is Gujarat. Gujarat mein you have Surat, Bharuch and Cambay. Then you have in Kerala, Calcutta and Cochin. In Andhra Pradesh, Masalapattam, Bengal, Sunargaon and Chittagong. So these were the port towns. Let's quickly, I will just revise with you. One, towns as the administrative centers. South में it was Thanjavur, North में it was Delhi and Agra. Number two, towns as the center of the pilgrimage. If you have to just learn 3 or 4, you can learn Somnath in Gujarat. Then Tamil Nadu, you have Kanchipuram and Madurai, and Tirupati in Andhra Pradesh. Right? Then we did the third type of towns, which are the commercial towns. So commercial towns are like Surat, Bombay, Mumbai, Pondicherry, Madras and Calcutta. Right? Then we did the fourth, that is the port towns. So port towns जो है बच्चे, क्योंकि हमारी ट्रेड साउथ ईस्ट एशिया के साथ ही, वेस्ट एशिया के साथ ही, चाइना के साथ ही, यूरोप के साथ ही, मैंने आपको यहाँ दिखाया. राइट, सो यहाँ पोर्ट टाउन्स गुजरात में यू हैव सूरत, बरोच एंड कैम्बे, केरला में कैलकट एंड कोचीन, आंध्र प्रदेश में मसलापट्टम, बंगाल में सुनारगांव एंड चित्तागोंग. Right, so we've revised these towns. Now let's talk about the growth of urbanization. अब क्या था बच्चे कि every town had a mandi to which the villagers from the nearby village would get their products to sell. So mandi जो है बच्चे something like इस तरीके की लगती थी, आज के जैसे बाजार नहीं थे. So you can see यहाँ पर जो है वो पॉटरी या घड़े खरीद रहे हैं. There's a traveler जो बाहर से आया है. So यहाँ पर जो है every town had a mandi.
मंडी में जो नियर बाय विलेजेस के लोग जो हैं वो अपना सामान लेके आते थे, यहाँ प्रोडक्ट्स दे वुड सेल. और हर एक टाउन जो है दे हैड स्ट्रीट्स लाइंड अप विद शॉप्स एंड द मार्केट स्ट्रीट. Every town had their own artisans, and there were number of traders, and the merchants also traveled to come to these mandis and sell their products, right? Now if we think about Indian में क्या था, Indian लोग craftsmanship अगर हम बात करें तो क्या काम करते थे. So I would say बच्चे, Indian craftsmen excelled as weavers, metal workers, carpet weavers, shoemakers. So मैंने यहाँ पर आपको 4 चीज़ें मेन बताई है बच्चे. India was famous for the cotton textiles. That is about 150 type of cloth was produced. And आपको I think आपके question भी है कि name the 2 centers of cotton textiles. तो you can say Patna, Varanasi, or Dhaka or Kanchipuram. So easy ones are Patna and Varanasi. So you can say the 2 centers for cotton textiles were Patna and Varanasi. फिर है बच्चे आपका सिल्क प्रोडक्शन भी थी, दैट वाज इम्पॉर्टेंट इन बंगाल. इंडिया ऑल्सो एक्सेल्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज विच इज़ इंडिको. एंड यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ शुगर जो मिलती थी. वन इज़ गुड़, powdered sugar, and a little bigger crystals of sugar also known as mishri. Then they also excelled in stone cutting. ये ornaments बनाते थे किसके ivory के, पर्ल एंड डायमंड्स. आइवरी होते हैं जो हाथी के दांत होते हैं. देन दे ऑल्सो प्रोड्यूस्ड हाई क्वालिटी गन पाउडर. लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर यह है कि दे यूज्ड वेरी सिंपल टूल्स, राइट. नाउ ट्रेड एज अ प्रोफेशन, दैट मीन्स पीपल जो है दे हैड अडॉप्टेड ट्रेड, दैट इज आपका जो व्यापार करना है, दे अडॉप्टेड इट एज अ प्रोफेशन. That means there were many kind of traders selling products, but what were they selling? They were selling horses, salt, saffron and spices from distant places. ये ट्रेडर्स जो है बच्चे, इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया था, इकट्ठा किया था. ये अपने आप को गिल्ड्स या एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज किया था. सो व्हाट डिड द गिल्ड्स डू? दे सेट अप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ट्रेड. दे फिक्स द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट आइटम्स, राइट. जैसे सपोज अगर यहाँ पर मैं कॉटन टेक्सटाइल की बात करूँ तो हो सकता है कोई बड़ा सस्ता बेच रहा है, कोई बहुत जो है महंगा बेच रहा है. सो ये गिल्ड्स जो हैं अपनी अपनी क्लॉथ की या सिल्क प्रोडक्शन की या ऑर्नामेंट्स की या जो आपके बर्तन बनाते हैं, ये अपने अपनी गिल्ड बनाती थी. एंड दे वुड टेल दैट कितनी प्राइसेस जो हैं आपने लगानी है. And they also had certain rules and regulations for trade. Smaller items were sent in the bazaars, and for bigger items one had to go in the mandis. So अब main items of trade, ये आपको कई बार question पूछा भी जाता है कि what were the main items of trade in India? That was textiles and the food stuff. एंड ख़ास तौर पे बच्चे आपका जो केरला का एरिया है, द मालाबार रीजन जो है, दे वर नोन फॉर दी स्पाइसेस. कैसी स्पाइसेस? पेपर, जिंजर, कार्डमन, सिनेमन एंड कोकोनट्स. Now they were also various trading communities, Marwadis, Baniyas, Chetars and Bohras, right? So these were the trading communities. आपको ये भी question आ सकता है, name any 2 trading communities. तो मरवाड़ीज और बनियाज जो है आप लिख सकते हो. और trading जो है medieval India में it was a very specialized profession. Now we come to the foreign trade, right? Foreign trade means I had told you बच्चे, मैं फिर से आपको जो है उसी स्लाइड पे लेके जाती हूँ. देखो फॉरेन ट्रेड हमारी यूरोप के साथ थी, सेंट्रल एशिया के साथ थी, चाइना के साथ थी और साउथ ईस्ट एशिया के साथ थी. तो ये हम फॉरेन कंट्री से क्या ट्रेड करते थे, हम इनको क्या देते थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ना ट्रेड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट मतलब जो आपका कंट्री बाकी कंट्री में बेचता है, यानी कि जो इंडिया अपना सामान बाकी कंट्री में भेजता था, वो मैंने आपको बताया था इंडियन टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस. इंपोर्ट मतलब जो दूसरे कंट्री हमारे कंट्री में लेकर आते हैं. उसमें क्या था? ये देखो, पहले है आपका गोल्ड एंड आइवरी. आइवरी मीन्स हाथी के दांतों से बनी हुई चीज़ें. ये हम लोग अफ्रीका से लेते थे, इंपोर्ट करते थे. ब्लू पॉटरी आप देख सकते हो, ब्लू पॉटरी, टिन एंड सिल्वर हम चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया से लेते थे. और पर्शिया से हम लोग जो है हॉर्सेस इंपोर्ट करते थे.
अब आता है बच्चे आपका केस स्टडी। आपके केस स्टडी में जो है 3 ही जगह दिए हुए हैं, सूरत, हम्पी एंड मसलापट्टम, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं पर बेस्ड हैं। सो सबसे पहले है आपका सूरत। ना सूरत वाज अ मेजर ट्रेडिंग पोर्ट टाउन एंड अ पोर्ट ऑन वेस्टर्न इंडिया। हमने बात भी की थी कि पोर्ट टाउन्स में सूरत वाज वेरी इंपॉर्टेंट। कैंपे भी हमने बात की थी इसमें, ठीक है। सो सूरत वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर ताप्ती, right? And Surat was like a cosmopolitan city. यहाँ पर merchants from the different parts of the country like Multanis, Kashmiris, Bohra Muslims, Baniyas, they lived here. And Surat was also a gateway for trade with the West Asia, right? And from Agra to Delhi के लिए it was like a route there. Even जो Muslim pilgrims, they would go to Mecca. It was also a departure place for them. Just hold on. Right. So it also kind of it was also a platform for connections with the Arabian Sea and the markets from east and west. अब जितने आपके पास यूरोपियन ट्रेडर्स आए, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, उन सब ने अपनी फैक्ट्रीज जो है यहाँ पर सूरत में फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की। एंड एज आई टोल्ड यू बच्चे, मेन आइटम्स ऑफ द एक्सपोर्ट जो है सूरत में टेक्सटाइल्स थे, indigo and sugar, right? So very quickly, Surat was a major trading town and port on the western India, and it was situated on the river Tapti. यहाँ पर merchants from the different part of the country आते थे. It was a gateway of trade with West Asia, and आपके जो Europeans हैं, they established their trading factories here. And what they used to export, again export means जो आपका country बाकी countries को दे रहा है, तो वो थे textiles, indigo and sugar. Now comes your Hampi. Hampi में जो है बच्चे, that was the capital of विजयनगर एम्पायर. अभी तक हमारा थिंजौवर भी आया था. थिंजौवर was the capital of the Cholas, right? लेकिन Hampi was the capital of Vijayanagar Empire, and Hampi was situated on the Krishna Tungabhadra river basin. This town was situated on a hill surrounded by strong stone walls and 20-kilometer long water channel. मतलब जहाँ उनकी टाउन जो है वो फिनिश होती थी, 20 किलोमीटर्स लॉन्ग वाटर चैनल था, ताकि कोई भी उनके जो टाउन को जो है अंदर क्रॉस ना कर सके. लेकिन हम्पी में अच्छी बात ये थी, बहुत ब्यूटिफुली कार्व टेम्पल्स एंड एजुकेशनल सेंटर्स थे, और यहाँ जो ये मेन क्रॉप्स ग्रो करते थे, दैट वाज ग्रेन्स, पल्सेस, बीटल, नट्स एंड जिंजर. So what was sold in the markets of Hampi? That was the silk from the China, precious stones, horses. That was all sold in the Hampi. और हम्पी में ना बच्चे दो बहुत इंपॉर्टेंट आपके टेम्पल्स भी हैं. ना पहला आपका है विरूपक्ष. ना दिस इज योर विरूपक्ष टेम्पल, एंड द अदर टेम्पल इज द विथाला टेम्पल. Right, now very quickly, this is the picture that you also have in your book. This is Masalapattam. Now this was located in Andhra Pradesh on the Coromandel coast. Now ये जो आपकी place जो है, this town जो है, that was founded by the Arabs while they were searching their way from Red Sea to South India. और यहाँ बच्चे देखो, जैसे हमने सूरत में बात की टेक्सटाइल्स की, हमने हम्पी में बात की फूड ग्रेन्स की, मसलापट्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी वीविंग और डाइंग की, यानी कि कपड़े को वीव करना. इसीलिए कपड़े की डिफरेंट वीविंग के साथ जो एसोसिएटेड है, उसका आंसर जो है हमेशा मसलापट्टम ही होगा. जैसे कलमकारी कपड़े की बात करते हैं या चिन्स की बात करते हैं, चिन्स वाज अ डाइड कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस्ड इन मसलापट्टम. यू कैन ऑल्सो गेट एज अ वन मार्कर. सो क्योंकि बच्चे मसलापट्टम की मेन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ही वीविंग और डाइंग थी, राइट. एंड कलमकारी की जो आप कह सकते हो कि उसकी जो डिमांड है, दैट वाज इन यूरोप एंड इन वेस्ट एशिया. Right, so this is all I have for you in this chapter. I would only say stay home, stay safe, but be positive and read this chapter from your book. Listen to my these slides, listen to my video. If you have any queries, I will be waiting for your comment. Thank you so much, Pache. And the next video, I will be asking the important questions based on this video. So let's see how much have you learned. See you all in